सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति नवमाभ्यास पृष्ठक्रमाङ्कः 18। संख्याशब्दानि सन्ति, संज्ञाशब्दानि सन्ति। अद्यतनः गुरुः इति गुरु अथवा विशेषण भारी अथवा बड़ा। तो गुरु विशेषण भारी बड़ा, हेवी और बिग, और अथवा लॉन्ग also. Guru can also mean long in terms of shabdas like chandas, laghu and guru, small and hrasva and dirgha, like that, like the guru shabdani in chanda. So guru, long, heavy, big. Bhanuhu surya, induhu chandrama, shatruhu shatru enemy, shishuhu balaka, vayuhu vayu, pashuhu pashu, taruhu vriksha tree, vriksha taru उभयोः संस्कृत शब्दे स्तः। साधुः सज्जन अथवा सरल अथवा अच्छा अथवा निपुण, सर्वे अर्थे साधुः शब्दः अस्ति। साधुचिन्तनम् इति अच्छा सोच है। वैसे साधुचिन्तनम् अथवा बहु साधु अस्ति परीक्षा, it's very सरल, easy. अथवा योगी साधु अस्ति निपुण, योगे साधु अस्ति, in yoga is master, very good. अपि च सर्वे उकारान्त पुल्लिंग शब्दानि सन्ति। गुरुः, भानुः, इन्दुः, सर्वे। अपि च काणः, काना, one eyed, one blind eye. Karnaha, कान, ears. Badhiraha, bera, deaf. Padaha, pair, legs. Khanjaha, langda, this is lame, one legged. Shabdaha, shabda. Arthaha, artha अथवा धन अथवा प्रयोजन। मीमांसा शास्त्रे प्रथमः पञ्चजैमिनी सूत्राणाम् एकः सूत्रः अस्ति, धर्मः किम् अस्ति। धर्मः वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवत् अर्थः इति धर्म। तो अर्थः मीनिंगफुल कैन आल्सो बी अर्थ, अथवा धन, मनी, धन अथवा प्रयोजन, सम पर्पस। सर्वे अर्थे अर्थः इति शब्दः अस्ति। विवाद, डिबेट और आर्ग्युमेंट अथवा सम कंट्रोवर्सी काइंड ऑफ थिंग। सर्वे आकारान्त पुल्लिंग शब्दानि सन्ति। कर्णः, बधिरः, विवादः, सर्वे। पुनः नेत्रं, सर्वे नपुंसकलिंग शब्द सन्ति। अब अधुना नेत्रं आंक, तृणं तिनका, ग्रास तिनका। सुखम सुख, दुखम दुख, प्रयोजनम प्रयोजन, पर्पस। हसितं हसना, लाफ्टर। तो सर्वे नपुंसकलिंग शब्दानि सन्ति। प्रकृतिः स्वभावः ईकारान्त पुल्लिंगः अस्ति। प्रकृतिः प्रकृतयः इतिवत्। हरिः हरि हरयः, कपि कपयः इतिवत्। अद्य
धातु शब्दानि न सन्ति परन्तु एकः क्रियाविशेषणः अस्ति एकः विशेषणः अलं अव्ययशब्दः अस्ति अलम् अस्ति अलमिति बस् अथवा पर्याप्त समर्थ शक्त अलम तो अलम विवादेन स्टॉप डिबेटिंग स्टॉप आर्ग्यूइंग अलम विवादेन डोंट आर्ग्यू इनफ ऑफ आर्ग्यूइंग रादर वैसे सूचना गुरु शब्द साधु गुरु टू साधु इज लाइक गुरु गुरवः गुरु गुरुनीतिवत् काण ब्लाइंड काण टू विवाद रामवत् अकारान्त पुल्लिंग शब्दानि सन्ति नेत्र तु हसित गृहवत् नपुंसकलिंग शब्दः अस्ति अकारान्त नपुंसकलिंग प्रकृति मतिवत् मति मतयः इतिवत् व्याकरण गुरु विधिलिंग तृतीया अनुस्वार सन्ति पूर्वे चत्वारः पाठे वयम् अपश्यामः लट् लोट् लङ् लृट् अपि लट् लोट् लृट् लङ् चत्वारः पाठे वयम् अपश्यामः लट् लोट् लृट् लङ् अधुना अद्यतनविषयः अस्ति विधिलिङ्ग् तो पञ्च लकारे पञ्चलकाराः वयम् अधुना द्रक्ष्यामः व्याकरण शब्द रूप गुरु शब्द के पूरी रो स्मरण करो गुरु शब्द देखो शब्द संख्या चत्वार गुरुशब्दः पृष्ठक्रमाङ्क 124 शतं चतुर्विंशतिः गुरुः अस्तु सुन्दरजी कृपया पठतु गुरवः गुरु गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुणां गुरौ गुरोः गुरुषु हे गुरु हे गुरवः तो षष्ठी बहुवचने गुरूणाम् अस्ति परन्तु सप्तमी बहुवचने गुरुषु अस्ति तो उभयोः सन्ति द्वितीया एकवचनः अस्ति गुरुं परन्तु द्विवचनः अपि अस्ति गुरु परन्तु द्वितीया बहुवचनः अस्ति गुरून् गुरून् गुरुणा तो गुरुणा नास्ति गुरुणा अस्ति किमर्थम् इर् अस्ति गुरु इति शब्दे इर् अस्ति तो गुरूणां नास्ति गुरूणां नास्ति अस्तु संक्षिप्त रूप लगाकर भानु आदि के रूप गुरुवत बनावे सभी उकारांत पुल्लिंग शब्द के गुरु के तुल्य चलेंगे नियम
षोडश इन शब्द में लगेगा गुरु शत्रु तरु। तो तरुणाम, तरुणा शत्रुणा, वैसे शत्रुणा गुरुणा शत्रुणा तरुणा वैसे। भानु, यदि भानु शब्द वयम ऐक्ष्यामः, ऐक्ष्यामः वयम इच्छामः, यदि भानु शब्दः, भानुः भानु भानवः, भानु भानु भानून्, भानुना भानुभ्यां भानुभिः, भानवे भानुभ्यां भानुभ्यः, पुनः भानोः भानोः, हाँ भानुभ्यां भानुभ्यः, भानोः भानुभ्यां भानुभ्यः, भानोः भानुवोः भानूनां, भान्वौ भान्वोः भानुषु। हाँ न न न भान्वौ किमपि गुरु गुरुशब्दः अस्ति गुरौ, परन्तु भानुशब्दः अस्ति भानुवौ, भानुवौ यदि अस्ति तो भान्वौ उ औ वौ इति। हाँ बा इन, हाँ हाँ भान्वौ। I will just check this, but I think it is that way. क्योंकि गुरुः र will become o, but in will become o. Like for example, we can check this. Check. भानोः, भानोः नास्ति भानोः, परन्तु द्विवचन अस्ति, षष्ठी द्विवचन अस्ति भान्वोः। अस्ति भानुः भानु भानवः, गुरुः गुरु गुरवः, भानुः भानु भानवः, भानुं भानु भानून्, भानुना भानुभ्यां भानुभिः, भानवे भानुभ्यां भानुभ्यः, भानोः भानुभ्यां भानुभ्यः, भानोः भान्वोः, गुरुवोः अस्ति भान्वोः भविष्यति, भान्वोः भानूनां। अद्यतन बहु प्रतिबन्धानि सन्ति। अधुना करेण्ट् एलेक्ट्रिसिटि प्रतिबन्धः अस्ति। लास्ट ईयर नेटवर्क कनेक्शन, ट्राइंग टू reconnect. Wi-Fi's are not good.
हाँ अस्तु भानुः भानोः भानुवोः भानूनां षष्ठी एकवचनम् अस्ति भानुः भानोः द्विवचन भान्वोः गुरुवोः भान्वोः इति अस्तु धातुरूप भू विधिलिङ्ग् लकारे अवन्तिका जी कृपया पठतु भू धातु विधिलिङ्ग् लकारे किम् अस्ति भवे भवेतां भवेयुः भवे भवेतं भवे भवेयं भवेव भवेम हाँ मध्यम पुरुष बहुवचन अस्ति भवेत भवेत जैसे भवेत नास्ति भवेत इति हिंदी भाषायां संस्कृत भाषायां भवेत भवेः भवेतं भवेत पठेत पठेत पठेतां पठेयुः पठेः पठेतं पठेत भवेयं भवेव भवेम इति वत् अस्तु नियम संक्षिप्त रूप लगाकर पठ आदि के रूप बनावे पठेत लिखेत लिखेताम लिखेयुः लिखेः लिखेयम लिखेतम लिखेत लिखेयम लिखेव लिखेम अहम लिखेयम सः लिखेत लिखेत सा लिखेत भवान लिखेत भवती लिखेत परंतु यूयम भवेत पठेत लिखेत इति अस्तु कारक तृतीया अनुस्वार संधि तृतीया नियम 28 किम कार्यम अर्थः और प्रयोजन चारों प्रयोजन अर्थ में हो तो के साथ तृतीय होता है किम कार्यम अर्थः और प्रयोजन के साथ तृतीया होती है जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम किम कार्यम मूर्खेण पुत्रेण किम मूर्खेण पुत्रेण किम कार्यम मूर्खेण पुत्रेण को अर्थः मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम मूर्ख पुत्र से क्या लाभ या क्या प्रयोजन वेरी हार्श बट तृतीया विभक्ति इज यूज्ड इन सच केसेस त्रिणेन अपि कार्यं भवति त्रिणेन अपि कार्यं भवति त्रिणेन अपि किं कार्यं त्रिणेन अपि को अर्थः इति वत् तो किं कार्यम् अर्थः प्रयोजनं सर्वे शब्दानि तृतीया विभक्ति इति रूपे चलेंगे हाँ इति रूपे सन्ति नियम 29 अलम अलम बस मत अलम के साथ तृतीया होती है जैसे अलम हसितेन मत हंसो आज वेरी नेगेटिव एवरीथिंग अलम हसितेन अलम विवादेन विवाद मत करो डोंट फाइट डोंट आर्ग्यू डोंट डू डिस्कशन नहीं करो वैसे डिबेट नहीं करो अलम विवादेन नियम 30 येनांग विकारः नंबर इज 2320 येनांग विकारः इज अ बेसिक सूत्र बेसिक प्रथम अंग सूत्रः अस्ति 2320 शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है जैसे नेत्रेण काणः अथवा पादेन कर्णेन बधिरः इज गिवन पादेन खंजः लंगड़ा फ्रॉम द लेग सो लाइक दैट तृतीया विभक्ति अस्ति नेत्रेण काणेन कर्णेन पादेन हस्तेन करेण कर hand also हस्तेन खंजः अस्ति इति वत् नियम 31 प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यान प्रकृति स्वभावादि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है जैसे प्रकृत्या साधु दिस नेचर इज वेरी काम प्रकृत्या साधु अथवा स्वभाव से सरल और इट इज द नेचर इज इट्स नेचर इज वेरी इजी वेरी सिंपल स्वभाव से सरल सुखेन जीवति इज लिविंग Prakriti does not follow like Hari because it's Prakritya. हाँ प्रकृत्या will be mati not like Hari they have given right mativat Mativat. हाँ
not hari. In the beginning I think I said hari. No, not hari. Mativat. Prakriti is mativat. So matya, nadya, nadivat. But not like the ikara of hari. Hari is No, because kimartham hari shabda ikarada pulinga asti. Nadi shabda ikaranta. Ha. Ikaranta. Ikaranta strilinga asti. Mati ikaranta strilinga asti. प्रकृति अपि स्त्रीलिंग शब्द अस्ति. प्रकृति माया भगवान श्री कृष्ण उवाच प्रकृति तृतीय अध्याये 27 श्लोकः अस्ति. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः. प्रकृतेः षष्ठी विभक्ति अस्ति. ऑफ ऑल द एक्शंस ऑफ प्रकृति आर इन प्रकृति. प्रकृतेः नदीवत् स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति. अस्तु. सुखेन जीवति दुःखेन जीवति सरलतया लिखति. सर्वे तृतीया विभक्ति अस्ति. संधि अंतिम अन्ते वयं संधि द्रक्ष्यामः अद्य. अस्तु. उदाहरणवाक्य उसे पढ़ना चाहिए. तो ये पृष्ठ क्रमांक है 19. उसे पढ़ना चाहिए वह पढ़े. सः पठेत् अथवा स पठेत्. स पठेत् अपि साधु चिन्तनम् अस्ति. स पठेत्. एकनिमिषः. अस्तु. स पठेत्. तुझे लिखना चाहिए त्वं लिखे है. मैं गुरु को नमस्कार करूं. अहम गुरुं नमेयम् अथवा अहम गुरु नमेयम्. सिंपल. बहु सरल अस्ति. दुर्जनेन कोऽर्थः किं प्रयोजनं किं कार्यं. दुर्जन से क्या लाभ है, क्या कार्य है, क्या प्रयोजन है. अलम भोजनेन भोजन मत करो. So this कोऽर्थः would be aim पदार्थ. एङः पदान्तादति. एङः पदान्तादति अस्ति. अतो भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि अपि अस्ति. इट इज आल्सो दैट. परंतु प्रथमा एङः पदान्तादति इज द बेसिक सूत्र. O is there and O and avgrahakam. कः अर्थः इति कोऽर्थः. एङः पदान्तादति. अलम भोजनेन भोजन मत करो. अस्तु. पादेन खंजः. सुंदर जी कृपया वदतु. पादेन खंजः किं भवति. पैर में लंगड़ा है. गुरु शिशु प्रश्नं पृच्छेत्. शिशु गुरु शिष्य को प्रश्न पूछना चाहिए. It is not शिष्य को गुरु से पूछना चाहिए because here नहीं. गुरु शिष्य because शिशुम is शिशु. So therefore it is को. Yes. So गुरु शिष्य को गुरु शिष्य को प्रश्न पूछो. सम्यक. पूछना है मतलब विधिलिंग. पूछना चाहिए. सम्यक. सूर्य मरीचिभिः तपेत्. सूर्य की किरण से तपता है. तपना चाहिए. और सूर्य किरण से तपना चाहिए. मरीचिभिः कैन बी किरणों से. बहुवचन. किरणों से. सम्यक. अपि च मरीचिः किरणों से विल बी मरीचिभ्यः. किरण के द्वारा इज अ बेटर ट्रांसलेशन. और इंदुः सुदां वर्षेत्. इंदुः चंद्र. So चंद्रमा मधुरम अमृतम बरसना चाहिए. सम्यक्. अवंतिका जी कृपया वदतु. दशम भूपतिः शत्रून् जयेत्. भूपति राजा. शत्रुन जयेत्. भूपति ने शत्रु को जीतना चाहिए. पुनः अग्रे.
साधु पशुभिः हाँ साधुः पशुभिः सह चरे। साधु ने पशु के साथ हाँ चलना चाहिए। हाँ सम्यक्। साधुः पशुभिः सह चरेत्, बहु सम्यक्। तरुः फलैः नमेत्। तरु तरु फल फल के कारण झुक रहा है, नमेत्। नमेत् इति नमस्कार रहा है, नमस्कार रहा है। विधिलिङ्ग् अस्ति, विधिलिङ्ग् प्रयोगः अस्ति। सॉरी हाँ। वृक्ष हाँ फलों के कारण झुकना चाहिए। हाँ सम्यक्। अस्तु। सज्जनाः विद्यया सह नमेयुः। Here the word falaihi. हाँ एकनिमिषः। हाँ फलैः Falaihi. फलैः। जन्मे एकनिमिषः। हाँ अवन्तिका जी भवतु कृपया। सज्जना हाँ सज्जन ने विद्या के सामने झुकना चाहिए। नमेयुः नमस्कार करो। हाँ परंतु नमेयुः सज्जनाः बहुवचन प्रयोग, सज्जनों, और विद्यया सह, विद्या के साथ। इसका हम्म, अच्छा, तो सज्जन ने विद्या के साथ झुकना चाहिए। हाँ सम्यक्। सज्जनों ने हाँ सज्जनों ने, सज्जनों सज्जनों ने सम्यक्। हाँ सुंदर जी No, word falaihi. हाँ So the Falaihi. phala प्रकृत्या साधु का मीनिंग क्या होगा? प्रकृत्या साधु इन नेचर, वो स्वभाव से साधु है, सरल है। प्रकृत्या साधु स्वभाव से, प्रकृति मतलब स्वभाव, नेचर, उसके नेचर। हाँ सुंदर जी कृपया। फलैहि falaihi. So हाँ। falaihi is bahuvachana. बहुवचन, तृतीया बहुवचन। Tritiya bahuvachana, right? हाँ। And it is like Rama, the phala, like griha, गृहम, like griha. So grihaihi. फलम Phalam. तो गृहम, फलैहि हाँ, गृहैहि, गृहैहि। तृतीया बहुवचन। अस्तु, संस्कृत बनाओ। अवंतिका जी भवती एव वदतु कृपया। दुर्जन शिष्य से क्या लाभ? दुर्जनः शिष्ये हाँ किं लाभ लभेयुः? हाँ किं लाभ? दुर्जन दुर्जनः दुर्जनेन शिष्येन, दुर्जनेन शिष्येन। दुर्जनेन शिष्येन किमर्थं? सब्जेक्ट विल बी आल्सो इन तृतीया। हाँ दुर्जनेन। हाँ, जैसे प्रकृत्या साधुः, प्रकृत्या साधुः में हाँ। प्रकृत्या तृतीया में है, तो जैसे वैसे ही दुर्जनेन शिष्येन, दुर्जनेन शिष्येन किं लाभः? व्हाट इज द पॉइंट? उससे क्या लाभ है? शिष्येन आल्सो तृतीया। हाँ शिष्येन अपि तृतीया अस्ति, क्योंकि यहाँ पे दुर्जन शिष्य, जो शिष्य वो जो दुर्जन है उससे क्या लाभ है? सज्जन शिष्य से क्या कुछ तो लाभ होगा, दुर्जन शिष्य से क्या लाभ है? तो दुर्जनेन शिष्येन किं लाभः? So durjanena shishya. हाँ। It is not durjan का शिष्य। नहीं, क्योंकि यहाँ पे दुर्जन के शिष्य से नहीं लिखा है। हाँ, दुर्जन का शिष्य वैसे नहीं लिखा है, दुर्जन शिष्य से, दुर्जनेन शिष्येन क्या क्या किं लाभ? बहु सम्यक्। द्वितीय भवती वदतु। द्वितीय मत हसो। अलम हसनेन हसितेन, अलम हसितेन हसितेन, इति अलम हसितेन, अलम खादितेन। हाँ सम्यक्, अलम खादितेन। वेरी बैड एग्जाम्पल्स दे आर गिविंग। डोंट लाफ, डोंट ईट, परंतु अलम विवादेन वैसे। नवम कृपया तो शिशु गुरु को नमस्कार करें। शिशु गुरु को नमस्कार करें। शिशु हाँ गुरु को, हाँ मीन्स गुरु तृतीय आएगा ना यहाँ पे। गुरु को, गुरवे, गुरु को, नमस्, गुरु को अगर है तो द्वितीया। गुरु, गुरुं, हाँ गुरु। शिशुः गुरुं
नमस ये हमेशा यही होता है। नमस्कार मुझे याद ही नहीं आता कैसे बनाना है। नमे नमयुः नमेयुः या नमस्करो नमस्कारं कुर्वेत् अथवा नमेत्। शिशुः एकः अस्ति, एकः एकः अपि शिष्यः, बहु शिष्यः नास्ति। एकः शिष्यः एकं गुरुं नमेत्। नमेत्। अस्तु, भवती एव वदतु कृपया। हाँ, प्रश्नः अस्ति वा? When namas word comes, I really find difficult to Yes. that the rupa. हाँ, it is nam dhatu is there. अथवा best is this namaskar and kru dhatu. That if you want, if namaskar is very difficult, we can just do namaskar and kru dhatu. Kuruvet. It will be kuryat. Sorry, namaskar kuryat. तो नमस्कारम कुर्यात you can say. अथवा नमेत पठेत, पठेत नमेत, पठेत भवेत लिखेत हसेत। पठेत मीन्स पढ़ना होता है ना, पढ़ना चाहिए। हाँ, उसको पढ़ना चाहिए, स पठेत, उससे पढ़ना चाहिए, वैसे है। तो उसको नमस्कार करना चाहिए, मतलब नमेत, वैसे। हाँ, दशम वदतु कृपया। तू सूर्य को देख। तू सूर्य को त्वं सूर्यं पश्येः। सम्यक्, पश्येः अथवा हाँ, लोट् लकार अपि अत्र सम्यक् अस्ति। भवती वचन, भवत्या वचन बहु सम्यक् अस्ति। व्हाट यू सेड, जो आपने बोला बहुत सम्यक है, क्योंकि आज विधिलिंग का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे लोट भी चलेगा। त्वं सूर्यं पश्यतु, त्वं सूर्यं, यू कैन से पश्य। त्वं सूर्यं पश्य। हाँ, जैसे शृणु, खाद, पठ, वैसे त्वं सूर्यं, हाँ, गच्छ, त्वं सूर्यं पश्य। परन्तु भवान्, भवती, भवती वा भवत्या वचन सम्यक् अस्ति। भवत्या वचनम् आसीत् त्वं सूर्यं पश्येः। सम्यक् अस्ति, बहु सम्यक् अस्ति विधिलिङ्ग् प्रयोगे। सुंदर जी कृपया वदतु तृतीय। मत खाओ, नहीं मत खाओ नहीं चाहिए। चतुर्थ बताइए। शत्रुः, हाँ, शत्रुः नेत्रेण काणः अस्ति। काणः अस्ति, बहु सम्यक्। ये 12 वे शत्रुओं को जाती। नहीं, वो भी नहीं जीते, ठीक है, वे शत्रुओं से जीते। चलो, हाँ, ते, हाँ, ते शत्रुभिः, हाँ, ते शत्रुभिः, हाँ। ते, परंतु किमर्थं शत्रुभिः? no, because they were शत्रुओं को। हाँ, so therefore ते शत्रून्, शत्रुन, हाँ, ते शत्रून्, ते शत्रुन, and then it is jay, ते शत्रून् जेयुः, जेयुः। सम्यक्। अंतिम, शिशु दूध पिए। शिशुः दुग्धं, दुग्धं, हाँ, पिबेत्। सम्यक्। अस्तु, अशुद्ध तु शुद्ध। अशुद्धवाक्य अस्ति अलम हसितस्य नास्ति, अलम हसितेन तृतीया भक्ति अस्ति। नेत्रस्य काणः नास्ति, नेत्रेण काणः। सुखात् वहति नास्ति, सुखेन वहति। गिरौ गच्छेत् नास्ति, गिरिं गच्छेत्। दुग्धं पिबेत् नास्ति, दुग्धं पिबेत्। अच्छा, दिस इज द क्वेश्चन यू हैव, सुंदर जी। द पंचम, दुग्धम पिबेत्। Yeah, correct. That's the one. So that is why dugdam, that im is taken off and anuswara is put. Yeah, no, that's right. No, I realized that. अस्तु। हाँ, अभ्यासः 2 ख को लट लोट और ऋट में बदलो।
तो अवंतिका जी कृपया वदतु 2 ख को 1 ख को One of the हाँ questions. हाँ एक निमिषः नंबर 1 in संस्कृत बनाओ. हाँ वायु सुख से बहती है. हाँ So बहती है, we will use प्रवाह. What would be the word for बहती? फॉर बहती Yeah. तो वायु सुख से सुखेन. सुखेन हाँ That बहती is प्रवाह. वायुः सुखेन प्रवाह करोति प्रवाह करोति. प्रवाहम प्रवाह is flow. हाँ प्रवाहं करोति अथवा एकः अस्ति वहति वहति वहाँ they use the word ले जाना. हाँ तो वही बोल सकते हैं वी कैन से दैट ओनली ले जाना is flowing. Water is flowing. You can't say पानी ले जा रहा है. ठीक है गच्छ गच्छ गच्छेत् यू कैन से Yeah, वहति है गच्छति But it just seemed odd. You know? See, Sorry. it's a good question. You can say because of the language there are small differences. Otherwise, Just the flow because ये हाँ, गंगा जी. हाँ 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 इसलिए do we say गंगा जी प्रवाह? Or do we say गंगा जी गच्छति गच्छेत्? गच्छेत् हाँ 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 गच्छेत् सुखेन गच्छेत् Okay. happily she is going like that is enough. हाँ अस्तु अवंतिका जी कृपया वदतु लट् लोट् लिट् कस्मिन् धातु हाँ नम धातु you find it difficult right नम धातु we can do लट् लोट् लिट् में बदलना है. I will try. Very wonderful. Yes, please try. लट् नमति नमतः नमन्ति. Sorry, I had to make a sentence. नहीं नमति नमता नमन्ति फिर अग्रे Okay. नमसि नमथ नमथ हाँ. नमामि नमावः नमामः. बहु सम्यक् अस्ति. Then लोट् लकारे लोट् नमतु नमतां नमन्तु. हाँ. नम नमतं नमत. हाँ नमानि नमाव नमाम. बहु सम्यक्. हाँ लिट् लकारे नृ- नृ- नमिष्यति नमिष्यति नमिष्यत. हाँ? नमिष्यति नास्ति. नम धातु will become नम्स्यति I think. नमस्यति नम्स्यति नमस्यति नम नम नमस्यति नम्स्यति नम्स्यतः नम्स्यन्ति. नमिष्यतः हाँ नमिष्यन्ति नमिष्यन्ति नम्स्यन्ति नम्स्यति नम्स्यतः नम्स्यन्ति. नम्स्यन्ति. हाँ नम्स्यति नम्स्यतः नम- नम्स्यन्ति. स्यसि हाँ नम स्यथ हाँ नम स्यथ हाँ नम्स्यथ. हाँ नम हाँ स्यामि हाँ. नमस्यामि हाँ नम नम्स्यावः नमस्यावः नम हाँ स्यामः. नम्स्यामः. सम्यक् बहु सम्यक्. Nam syama, the ma be half ma. यस् अनुस्वार Anuswara. नम्स्यामि. हाँ पुनः लङ्लकारे लङ्लकारे वदतु भवती एव. बहु सम्यक् अस्ति भवती भवत्याः वचनं. लङ्लकारे किं भवति नम धातु. हाँ अनमत् हाँ अनमतां हाँ अनमन् अनमत् अनमवः अनमः अनमतं हाँ अनमत हाँ अनमवम् हाँ अनमवाव हाँ अनमवाम. सम्यक् बहु सम्यक्. अथवा भूधातु भवत् भवत् भवति नम धातु नमति अनमत् अनमताम् अनमः अनमतम् अनमत अनमम् अनवाव अनमवाम. बहु सम्यक्. So now I don't think you should be confused, right? Nam dhatu is quite clear that lang lakara last. If you want to say, for example, lang lakare, I did namaskara. It will be anamama. It's not anamam. Anamama. Because anamam anamama vayam.
For Vayam it will be Anamama. Anamama. हाँ. Anamama. For Vayam. Correct. I did Namaskara, for example. Namam. Anamam, Anamam. Anamava, Anamama. So now I hope Avantika ji sarve सुलभः सरलः अस्ति नम धातु मोहः न ऐक्ष्यामः मोहः न ऐक्ष्यामः. We don't want to be confused. We should not be confused about nam dhatu, because you said nam dhatu is confusing. You have said all 5 lakaras for nam dhatu correctly. But if you have questions, of course, we can discuss. हाँ. सुंदर जी कृपया वदतु तस्मिन् देख वो दशम लट लोट रिट लंग दशम तू सूर्य को देख, तो देख को पश्य. हाँ. So pashyati, pashyata, pashyanti, pashyasi, pashyatah, pashyata, pashyami, pashyavah, pashyamah. सम्यक्. लोट लकार Pashyatu, pashyatam, pashyantu, pashya, pashyatam, pashyata, pashyami, pashyava, पश्यानि पश्याव pashyani, pashyava, pashyamah. सम्यक्. हाँ. रिट लकार. Apashyat, apashyatam, no, lang lakar. हाँ 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 लंग लकार. Apashyam. हाँ अपश्यम. अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्यम, अपश्यावः, अपश्याव, अपश्याव, अपश्याम. अपश्याम. हाँ सम्यक्. Then beginning लिट् लकार. lit lakara, अपश्यति. लिट् लकार भविष्य. Pashishish, द्रक्ष. Draksh, yeah, you have to go draksh. द्रक्ष्यति. Drakshyati. Not अद्रक्ष्य. द्रक्ष्यति. Just drakshyati. Yes. द्रक्ष्यति. द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः. बहु सम्यक् अस्ति. पुनः विधिलिङ्ग् लकारे द्रक्ष्येत्, पश्येत्. पश्येत्. So here we don't have to use draksha. So पश्येत्, पश्येतां, पश्येयुः, पश्येयुः. पश्येयुः, पश्येः, पश्येतं, पश्येत, पश्येयं, पश्येव, पश्येम. पश्येयं, पश्येव, पश्येम. बहु सम्यक्. So very simple. Then वाक्य बनाओ कोऽर्थः. These are the important ones, but maybe we don't have so much time. We will see. कोऽर्थः किं प्रयोजनम् अलम्. तो अवन्तिका जी कृपया वदतु कोऽर्थः अपि च कोऽर्थः एक वाक्येन रचयतु. कोऽर्थः एके वाक्यं रचतु. कोऽर्थं भवति मार्केट को क्या कहेंगे? मार्केट आज या कल आया ना, कभी तो रिसेंटली आया ये तर्क संग्रह में मार्केट का शब्द गेम. मार्केट यू कैन से इट्स ए विपणि. कोऽर्थं भवति. हाँ कोऽर्थं विपणि गच्छति. हाँ कोऽर्थं भवति विपणिं गच्छति. तृतीया विभक्ति विपण्या. प्रकृति जैसे प्रकृति प्रकृत्या विपणि विपण्य. देयर इज अ बेटर वर्ड. विपणि इज वन ओल्ड fairly used. Swamiji used one word yesterday or 2 days ago for market. अस्तु विपण्या. विपण्या सम्यक् अस्ति. विपण्या कोऽर्थं गच्छेत्. बहु सम्यक्. किमर्थं नास्ति. कोऽर्थं गच्छेत्. अस्तु प्रकृत्या. प्रकृत्या एकवाक्यं. प्रकृत्या प्रकृत्या सदन उसका स्वभाव है. माता प्रकृत्या करुणा अस्ति. बहु सम्यक्. करुणा माता बहु सम्यक् अस्ति. माता
प्रकृत्या करुणा अस्ति, बहु सम्यक् अस्ति. पुनः अलं पठेत्, अलम् अपि च पठेत्, एकं वाक्यं किं भवति? अलम पठेत्. अलम असत्यं पठेत्. अलम् असत्यं पठेत् न. नहीं. किमर्थम्? अलं तृतीया विभक्त्या सह गच्छति अलं. तो अलं विवादेन सा पठेत्. फॉर एग्जाम्पल, अलं विवादेन सा पठेत्. डोंट टॉक, ही शुड. What will be? डोंट टॉक, ही शुड स्टडी. अलं विवादेन कमा सा पठेत्. किन्तु किमर्थं पठेत् इति प्रथमपुरुष अस्ति, अलं मध्यमपुरुष, अथवा अलं विवादेन पठेत्, अलं विवादेन पठेः इति अपि अस्ति, इति अपि सम्यक् अस्ति. डोंट डू समथिंग क्रोधेन. हाँ, अलं क्रोधेन तो पठेत्. क्रोध मत करो, वो पढ़ रहा है. हाँ, अलं क्रोधेन सह पठेत्. सम्यक् अस्ति. अलं क्रोधेन सह पठेत्. अहं क्रुध्येन, अलं कुप्येन सह पठेत्. कुप्यं हाँ, कोपधातु इज टू गेट एंग्री. क्रोध नहीं होगा, क्रुद्ध हो सकता है. क्रुध्येन अपि सम्यक् अस्ति. क्रुध्येन. परंतु में वेल होता है ना. कोप धातु होता है ना, कोप धातु. कोप धातु इज फॉर एंगर. they will get angry and go away. वैसे हाँ, तो both are correct. what you said also is सम्यक् acceptable. भवती एव वदतु, ये रिक्तस्थलों को भरो, वो वाले में पंचमः डैश पश्येत्. हाँ, पश्येत्. अलम पश्येत्. अलम पश्येत् नास्ति. पश्येत् इति प्रथमपुरुष एकवचन अस्ति. पश्येत्. किं पश्येत्? किं पश्येत् इज करेक्ट. व्हाट आर यू लुकिंग एट? किं पश्येत्. सम्यक. क्या देख रहे हो? किं पश्येत्. हाँ, क्या देखना चाहिए वैसे. किं पश्येत्. और फिर नमेयं भवती एव वदतु. नमेयं भवती प्रिय शब्द अस्ति. गुरुं नमेयं. हाँ, सम्यक्. गुरुं नमेयं. बहु सम्यक् अस्ति. गुरुं नमेयं. आई शुड डू नमस्कार. हाँ, तो सुंदर जी कृपया वदतु, किं प्रयोजनं काणः. सेनापति नेत्रेण काणः किं प्रयोजनं. What is the use of having a soldier who is blind? बहु सम्यक्. हाँ, सम्यक् अस्ति. अस्तु. पृच्छेत् अलम् एंड पृच्छेत्. अलम् एंड पृच्छेत्. अलम प्रश्नेन न पृच्छेत्. No, alam prashnena, don't ask questions. Don't ask questions. Yeah, alam prashnena. Parantu pritchet nasti. Yeah, pritchet will have to come in. So don't ask questions.
Saha Prichet, when he is asking, alam he is asking, so you don't ask. alam vivadena Alam Vivadena Saha Prichet. सम्यक् एकः वदतु पठेम पठेम किं भवति So therefore Patema is Vayam. वयं पठेम सम्यक् पठेम. सम्यक् अस्ति अस्तु अपि वयम् अपश्यामः मो अनुस्वारः सन्धि द्वितीयनिमिषे मो अनुस्वारः सन्धि किम् अस्ति मो अनुस्वारः सन्धि पृष्ठक्रमाङ्कः 18 अन्तिमभागः अस्ति मो अनुस्वारः सन्धि इति द्वे कार्यं स्तः मो अनुस्वारः सन्धि प्रथमः कार्यमस्ति यदि व्यञ्जन अस्ति रामम् इतिवत् व्यञ्जन रामम् अथवा कृष्णम् ईश्वरं रामं पश्यति व्यञ्जन अस्ति अत्र प रामं पश्यति इति प इति व्यञ्जन अस्ति रामं पश्यति यदि अस्ति रामम् अनुस्वारः भविष्यति रामम् उपरि अनुस्वारः भविष्यति Vyanjanam equal to Hali. Yeah, hal means all vyanjanas basically. Hal is also Vyanjana. Hal means every vyanjana, that whole group of vyanjana is called hal in one Maheshwara Sutra. Okay. So her to il Because basically. in the definition, they use the word Hali. They don't use the word Vyanjana. Bahu samyak, exactly. So Hali will be Saptami. Hali. So in hal, it is like that. So hali व्यंजना मतलब in all व्यंजना अगर व्यंजना बाद में आ रहा है तो राम के ऊपर अनुस्वार रामम पश्यति अथवा कृष्णम पश्यति is looking at Rama. रामम खादति रामम गच्छति रामाम खादन्ति रामाम पश्यन्ति वैसे भी अच्छा है ठीक तो वैसे इत्थम अपि सम्यक् अस्ति परन्तु यदि यदि स्वर पुनः भवति पुनः रामम् अपश्यत् सन्धिकार्यम् अस्ति सन्धिकार्यम् उभयोः शब्दे एकं शब्दं भवति उभयोः रामम् अपश्यत् कृष्णम् अलिखत् कृष्णम् अलिखत् Krishnam and then A will go. Krishnam अलिखत् A होगा A will go and this im will become ma. That anuswara will go away. So Ramam alikhat Krishnam apashyat. We'll see example in the Bhashya today. For example, see in this Laghu Siddhanta Kaumudi definition, it is ma antasya, okay, which is correct. So you have to have ma at the end. Antasya anuswaro hali. Ma antasya anuswaraha hali. So therefore this is a very simple. Yeah, so simple. Ma antasya anuswaraha hali. Samyak. So in the picture that I shared with you, Sundarji, the Bhashya, Avantika ji, you can see the screen, right? Yes. Okay. So this is Atra Asti Brihadaranyaka Upanishadi Purva Pataha. Yesterday, 2 days ago, whatever we studied, this is page number 506. Okay. So I thought instead of just looking at Chumma Sandhi, some Abhyasa, we can actually see in what we have to do. This is what we have to study, right? Downloads or pictures. I don't know what in iPad how it goes. because it's not in my books, it's not in my... No, you have to go to picture, photos, right? Your photos are? No, if you directly click on the that image, it will open. He found it. No need to go in a gallery or something. Okay, he found it. No, he didn't go to gallery, I think. He just directly clicked. Okay. If you turn the iPad, it will become bigger, for example. So, where is Mo Anuswara Sandhi?
You yourself see and tell me. Oh, I think Sarvopanishadam. Samyak. Sarvopanishadam is one. No, you can do it. It is quite easy. See, Ramam Pashyati. Anuswara will come. So anywhere Anuswara is before Vyanjana, it is more Anuswara. Also, Kimartham Tat. Kimartham Tat. Samyak. So that is another one. Sarvopanishadam. Sarvopanishadam Paramatmaikatva Jnapana Paratve Atha. That whole word Sarvopanishadam Paramatmaika Aikatva. So that Sarvopanishadam Paramatmaikatva did not become one long word, or it will not be combined. It is only kept separate. Sarvopanishadam Paramatmaikatva. But a better example of Mo Anuswara is Kimartham. Because Mo Anuswara actually has some real purpose when there is Swara. The whole point is to combine. So Swara there, Kimartham is the best example. Avantika ji, you found Kimartham, right? So Kimartham जैसे और क्या? द्वितीयार्था पतिं प्रपंचयति. ये भी मोनुस्वारी है. कुत्र अस्ति? In middle, second line. Middle second line. टीका अथवा भाष्य में? सॉरी टीका में. ये हिंदी वाला पैराग्राफ है ना, उसके एकत्व ज्ञानस्य सनिधान नहीं, सॉरी, हिंदी के ऊपर पति द्वयं तत्र द्वितीया परम. अच्छा द्वितीयाम् अर्थापत्तिं प्रपञ्चयति. बहु सम्यक्. Exactly. Kalpati, that last line, right? From bottom second line. Kalpayati iti अर्थापत्ति द्वयम् उक्तं तत्र द्वितीयाम् अर्थापत्तिं प्रपञ्चयति. बहु सम्यक् अस्ति. करेक्ट. द्वितीयाम् अर्थापत्तिं. दिस इज मोर अनुसार. निर्विषयं सम्यक्. That is also. No, but that is also more Anuswara. Last line you are saying, right? Nirvishayam Niradhikaram. That is more Anuswara. That can be? Yes. Nirvishayam also? Because ni. But there is a next to is e, na? No, you have to say ni, not e. You have to take it as ni. That e is only addition to na. E is not akshara. So ni will be hal, vyanjana, or will it be? This is where Mo Anuswara confuses us. Yes. So this is why Mo Anuswara is best when there is swara. When there is hal. Swara following. Hal. See, when there is swara following, of course, then you just Vyanjana, it will not do anything. Like now, see, Nirvishayam Niradhikaram, it has not done anything. So it is Mo Anuswara Abhava actually. But it is still Mo Anuswara. There is no Monuswara. No, Mo Anuswara is making it not combined. Because of Mo Anuswara, those words are not combining. They are being separate. वैसे like for example, Dvitiyam Arthapattim is actually Dvitiyam Arthapattim. Dvitiyam Arthapattim. These are two words and they are combined into one. Dvitiyam Arthapattim. This is Mo Anuswara proper. But Nirvishayam Niradhikaram api Mo Anuswara asti, but it is not the best example. The better examples are always with Swara in Mo Anuswara. Ma becomes Anuswara. That is, Anuswara will become Ma instead of staying as Anuswara if it is Swara. And Pati Dvayam Uktam Tatra, that also is not Monuswara. You have to take Dvayam Uktam. Dvayam Uktam, Dvayam Uktam. You can take Mo Anuswara. That also you can take Mo Anuswara. Dvayam Uktam. Because that im has gone, otherwise Dvayam Uktam bhavati, parantu u iti swara asti. So Dvayam Uktam, Dvayam Uktam. Samyak. So these are examples. We will also see quickly
this Bhagavad Gita, the 10 shlokas that we had seen at the beginning of end of Prarambhika. You see, in first shloka, Prajahati yada kaman sarvan partham anogatan. इसमें है मौन स्वर. इसमें नहीं है. नहीं, कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन. वो दूसरे श्लोक में. हाँ, कर्तव्यम त्रिषु, दैट इज मोहन स्वर. परंतु 255 में प्रजाति यदा कामन सर्वान पार्थम मनोगतान, उसमें नहीं है. नमे पार्थासि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन सम्यक कर्तव्यम त्रिषु, दैट इज मोहन स्वर. परंतु सी द नेक्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, द्वितीय पंक्ति, द्वितीय भाग अस्ति. हाँ, नानवाप्तम अवाप्तव्यम, नान अवाप्तवम अवाप्तवम अवाप्तम अवाप्तव्यम. So that is combined. नानवाप्तम अवाप्तव्यम वार्ते एव च करोमि. So there you have no anuswara, even avaptam avaptavyam in between also. Aptam avaptavyam. That is the main Mohanaswara in that shloka. Any other shloka with Mohanaswara? नाहं वेदैर्न. सम्यक्. नाहं वैदैर्न तपसा, बहु सम्यक्. नाहं वैदैर्न तपसा न तानेन चिजिचे. अस्तु, स्वर, स्वरेण सह, विथ स्वर. ज्ञानं ते अहं. ज्ञानं ते अहं सम्यक्, परन्तु स्वरेण सह नास्ति, व्यञ्जनेन सह अस्ति. ते त इस् व्यञ्जन, परन्तु इति अपि च मौनस्वरः अस्ति. द मेन् मौनस्वर. दृष्टुं 11.53. दृष्टवान् असि, द्रष्टुं दृष्टवान् असि. सम्यक्. That also halant na? हाँ, not swara. Hala, exactly. That is also Vyanjana, but not with swara. Swara, there are 3 or 4 with swara. I found 3, but there will be more. Hamtva also. हाँ, aham to also. Aham to. Bhajati ekatvam. That is eco energy. Bhajati ekatvam. Yeah, that is eco energy. Ekatvam आस्थितः. Ekatvam आस्थितः. सम्यक्. एकत्वम् आस्थितः. That is one. Where it is? 631. यहाँ पे सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वम् आस्थितः. भजत्येकत्वम् आस्थितः. एकत्वम् आस्थितः. प्रथम पंक्ति. You found? इसमें मोनोस्वर है. हाँ, एकत्वम् आस्थितः. एकत्वम् आस्थितः. अच्छा, मोनोस्वर means it's not necessary that dot should be on top. No, that dot is on top only if consonant व्यंजना is पीछे. अगर स्वर आता है तो it will combine. जैसे I give an example. जैसे एकत्वम् आस्थितः, एकत्वम् आस्थितः, एकत्वम् आस्थितः. मामेकम. Then here bhu in the 7.2 bhuyonya ज्ञातव्यम अवशिष्यते. Correct. Exactly. ज्ञातव्यम अवशिष्यते. ज्ञातव्यम अवशिष्यते. Exactly. That is Mohanaswara. And last one, मामेकम. सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम. मामेकम. That is also Mohanaswara. Then that bhuyonyat jnatavyam avashishyate, first line. Jnanam teham savijnanam idam. Jnanam teham savijnanam. Vakshamya. नहीं, वो इको एनर्जी है. वक्ष्यामि अशेषतः. No, you see savijnanam idam. हाँ, savijnanam idam. वक्ष्यामि अशेषतः. हाँ, तो सविज्ञानम इदम ज्ञानम तेहम
That is Jnanam Teham is Monaswara. Teham Savijnanam Idam is Monaswara. Savijnanam Idam also is Monaswara. है ना? Jnanam Teham Vyanjana. Teham Savijnanam Vyanjana. Savijnanam Idam Swara. All three. So Avantika ji, tomorrow you can do vritti for Monaswara. Monaswara in Brihadaranyaka. Tomorrow you can do the vritti I'm for... not able to hear properly. Sundarji is saying tomorrow before Brihadaranyaka Upanishad you can chant Monaswara with vritti. Sorry. I'm struggling here. I don't know how to split the words. Okay. Oh, but see, like this, if we do, it is so easy to read in Bhashya, to split and Tika and all that. So we'll try this every day. Tomorrow there will be new Sandhi. I think tomorrow will be Eko Energy. That also we'll do this one. Okay. Love it. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutrabhashyakrutau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagini Vyomavadvyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namah. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Om.